हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास करो। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें भी हम लेवल 1 के क्वेश्चंस आज हम सोल्व करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए JEE, नीट, गुड सेट एंड बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभ्यास करो आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के साथ। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसका इंफॉर्मेशंस मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो यू कैन सी विद दिस स्लाइड, यहाँ पे हमारे पास स्पेशल ऑफर में लेके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें किसी स्टूडेंट्स को फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो भी ऑनलाइन विद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के साथ। सो आप लोगों को 2000 प्लस क्वेश्चंस है वो आपको सिर्फ 349 में मिल रहा है, जिसका प्राइस है 699। और उसमें भी आप लोगों के साथ एक बड़ा सा सरप्राइज लेके आई हूँ कि इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस कोड CHARMY15, so you will get the additional discount, जिसमें आप लोगों को 2000 प्लस क्वेश्चंस भी मिलेंगे विथ टेक्स्ट सॉल्यूशन एंड वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये जो ऑफर है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए है। किसी भी स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट के लिए परचेज करना है, सो यहाँ पे दिखाया है 2 सब्जेक्ट के लिए यू विल गेट 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को ऑनलाइन मिल रहा है इतने कम प्राइस में। यू कैन सी 649 में आप लोगों को 4000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलने वाली है विथ डिटेल एनालिसिस के साथ, टेक्स्ट सॉल्यूशन एज वेल एज वीडियो के साथ आपको मिलने वाला है। सो उसमें भी आप लोग CHARMY15 है वो कोड यूज करोगे, सो यू विल गेट द एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकता है। सो इट इज अ वेरी मच बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू गाइस कि आप लोग ये परचेस करोगे, सो यू विल गेट द बेनिफिट। कोई भी स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट के लिए परचेस करना है, यू विल से 6000 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहा है, और वो भी कितनी प्राइस में, 949 में ही सिर्फ मिल रहे हैं, और उसमें भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। आप ये कोड यूज कर रहे हो CHARMY15, सो दिस वन इज द वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। सो आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1। हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास करो। So today we are going to discuss about the chapter number 1, that you can see here, electric charges and field. So today we are going to solve the level number 1 and we are going to see the question 1 here. So as we are going to see with the questions, first we are going to make the data and then after we'll go to solve for these question answers. Okay, so let's start with the question number 1. When 10 to the power 20 electrons are removed. Okay, so how many electrons are there? Just look at here, 10 to the power 20 electrons. So the number of electron that we are going to write n, that is 10 to the power 20. They are going to be removed from a neutral metal plate through some process. Then the charge on it becomes, we want to find out what is the value of charge here. Okay, जितना डेटा हमको क्वेश्चन में दिया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। Now we are going to recall the quantization of the charge. That quantization of the charge Q is equal to, we are going to write n into E. Now what is the n? That you can see here, the 10 to the power 20. So let's put here value 10 to the power 20. Charge of electron, that is nothing but we are going to write 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. So just look at here, it will be 1.6 10 to the power 20, here 10 to the power minus 19, so 10 to the power 1. So that our answer Q, that will become
we are writing 16 coulomb. But just look at here, the main important word that is remove किया गया है. When the charge is going to be इतने numbers of electron remove किए जाते हैं, so it will gain the positive charge. So our answer should be plus 16 coulomb. So just we are going to look at with the option part. So the option C is the correct one, that is 16 coulomb. Okay, so let's start with the question number 2. When two spheres having phi q and minus q charge are placed at the certain distance. Okay, how many charges are there? 2 charges. So just we are going to make a data. We are going to draw, suppose this one is a sphere number A, we are giving the name, and the other one is a sphere B. On the sphere A, there is a phi q charge, okay. On the sphere B, there is a minus q charge, are placed at the certain distance. So we are taking that, suppose the distance between them is r, and the force acting between them is F, okay. Now they are going to be connected by the conducting wire and again separated from each other. So how much force will act between them if the separation now is the same as before? Now just look at here, the separation is not going to be changed. Separation is going to be same. The change is, first they are going to be connect, पहले उसको connect कर रहे हैं, then after it is going to be separated. So just look at here, जैसे ही ये सेपरेट किया जाता है, हमको ये पता होना चाहिए कि चार्ज इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बोथ द स्फीयर इक्वली. मीन्स जो भी चार्ज दिया जाता है उसको हमको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके दोनों स्फीयर में लिख देना है. सो फर्स्ट केस में तो पहले हम ऐसा लिखते कि सपोज फोर्स, वी आर गोइंग टू यूज द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ दैट इज नथिंग बट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 divided by R square. Here the Q1 is 5Q, here the Q2 is minus Q. So we are taking the value K in the place of Q1 5Q, in the place of Q2 minus Q, divide by R square. So if I am going to take a magnitude of the force, you will get it in the positive. So F, it is in the magnitude, that will be 5K Q square divided by R square. Okay, so we are giving this is the equation number 1. Now as they are going to be connected and separated, तो हम उसको अभी कैसे लिखेंगे? Just look at here, जैसे मैंने पहले बोला, जो भी चार्ज दिया गया है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है. तो on sphere A, here on the sphere B, 5Q प्लस कर रहे हैं, तो प्लस, here it is given minus sign, so plus minus minus, so we are going to write 5Q minus Q divide by 2 here, again 5Q minus Q divide by 2, and as they are going to be separated as the R distance only, the distance is not going to be changed. So what will be the charge on the sphere A and what will be the charge on the sphere B? Just look at here. On the sphere A, that will be 2Q charge. On the sphere B, it is 2Q charge. Okay, so let's, again we are going to use the Coulomb's law. So Coulomb's law, that is, I am giving the another name, F dash. F dash is equal to K Q1 Q2 by R square. In the place of Q1, you can see here 2Q, other charge is also 2Q, so I am going to put here 2Q into 2Q divided by R square. So F dash is equal to 4K Q square divided by R square. This one is your equation number 2. Now from the equation number 1, you can see in the place of KQ square by R square, KQ square divided by R square, can we divide this equation? You can see I want to find out F dash in the comparison to F, that is equation number 1. So I am going to divide F dash divided by F. Equation
2 divided by equation number 1. So you can see 4k q square divided by r square divided by equation number 1, that is 5k q square divided by r square. R square is going to be cancelled out, kq square is also going to be cancelled out. So what is the remaining factor? 4 by 5. So can we write f dash is equal to 4 by 5 times of f. So from the option you can see here we are getting 4 by 5. So according to the option you can say the option B is going to be correct one. Okay, so let's start with the question number 3. When the 10 microcoulomb charge is enclosed by the closed surface, okay, the value of the charge is given, that is 10 microcoulomb by the closed surface. Okay, closed surface में 10 microcoulomb charge है वो रखा गया है. The flux passing through the same surface, that is 5. The flux हमको 5 से डिनोट किया गया है यहाँ पे. Now another charge minus 5 microcoulomb is placed inside the same closed surface. Then the flux passing through the surface. Okay, so we are having the two cases. In the first case we are having 10 microcoulomb charge. In the second case we are adding the minus 5 microcoulomb charge inside the closed surface. So just look at here. Suppose I am going to draw a closed surface here. In the closed surface, in the first case we are having the 10 microcoulomb charge. Okay, for your information you have to note down 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb. So now we are going to use the Gauss law. As you are knowing the Gauss law, that is nothing but we are going to write summation q divided by epsilon naught. I am going to write summation q in. In means inside jitna charge hai, that we are going to be considered. So according to this figure we are having the 10 microcoulomb charge is there. So just I am going to put 5 is equal to 10 microcoulomb divided by epsilon naught. This one is equation number 1. Now we are going to see adding the minus 5 microcoulomb charge. Just look at here. So 10 minus 5 microcoulomb charge is going to be added. So that is equal to 5 microcoulomb. So at that time we have to find out what will be the flux. So again we are going to use the Gauss law phi dash. I am giving the new name. That will be summation q divided by epsilon naught in. Q in, inside. So here 5 microcoulomb divided by epsilon naught, that is 5 dash. So this one is the equation number 2. Now just we are going to see the equation 1 and equation number 2. I am going to divide equation 2 by 1. So can we use 5 dash divided by 5 is equal to 5 dash, that will be 5 microcoulomb divided by epsilon naught divided by 10 microcoulomb divided by epsilon naught. So epsilon naught is going to be cancelled out. Here microcoulomb is also means 10 to the power minus 6. Here 10 to the power minus 6, it also going to be cancelled out. So 5 dash divided by 5 is equal to 1 by 2. So 5 dash is equal to 5 divided by 2. So you can see from the option B is the correct answer, that is 5 by 2. Okay, so let's start with the question number 4. A sphere of radius r is uniformly charged with the volume charge density. Okay, volume charge density, that is denoted by rho. Okay, the electric field at a point lying inside the sphere at a distance r. हमको कौन से distance पे electric field find करना है? You can see r distance पे हमको electric field find करना है. Okay, so just first recall this word. What do you mean by volume charge density? Volume charge density, that rho is nothing but q.
the charge per volume. Here we are having the sphere. So sphere का volume 4/3 pi r cube use करेंगे. So just look at here. Suppose this one is a sphere, जिसका रेडियस है वो कैपिटल R जितना है. हमको ऐसा बोला है कि कोई इनसाइड पॉइंट कौन से डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करना है. So just look at here. Suppose I am going to take inside point R distance here. So I have to draw a Gaussian surface here. So just I am going to draw a Gaussian surface surrounding this one. Okay. R point से मैंने Gaussian surface को draw कर दिया है. Okay. Now as we are going to draw a Gaussian surface, we have to use the Gauss law. So Gauss law, that is nothing but we can use E dot ds is equal to summation q divided by epsilon naught. अभी हमको ये नहीं पता है कि इतना जो रेडियस जो ये r डिस्टेंस पे है कितना चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. सो उसके लिए हम ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है उसका यूज करना है हमको. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी रो इज इक्वल टू q बाई v. ओके, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब. So just look at here. If I am making, suppose I am giving the equation number 1. This one is my equation number 2. So I am going to make a subject of formula Q here. So Q is equal to, we can write rho into V. In the place of V, we are going to put the value 4/3 pi r cube. Okay. So just look at here, 4/3 pi r cube is that. I am giving the equation number. Now just I am going to put the value in the equation number 2 in the place of q. Okay, but you can see uniformly charged, we are considered positively charged से हमने उसको रखा, means सभी जगह पे positive charge है. तो positive charge होता है तब electric field that is going to be in the outward direction and the area जो लेते हैं वो भी always perpendicular outward होता है. So ये E dot ds जो दिख रहा है that we are expand E ds cos theta, वहाँ थीटा हम क्या पुट कर देंगे 0. So cos 0 that is going to be 1. So simply we are going to put the value E into ds means surface area. कौन से डिस्टेंस पे हम फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल r. So I am going to write here E into 4 pi r square is equal to, in the place of q we have to put rho 4/3 pi r cube. So just we are going to put down 4/3 pi r cube into rho divided by epsilon naught. Epsilon naught is there. Okay, whatever the cancel out term, 4 pi is cancel. R square here, r cube cancel. So we want to find out what will be the electric field here. So E is equal to, you can see, rho into R divided by 3 epsilon. So according to the option, you can say the option A should be correct one, that is rho R divided by 3 epsilon naught. Okay, so let's start with the question number 5. Charge Q is placed on a 4 corners of the regular pentagon. Here pentagon is given. Okay, pentagon has a 5 sides. 5 sides है और कितनी साइड, कितने कॉर्नर पे हमने चार्ज रखा है, 4 कॉर्नर्स पे रख दिया है. दैट इज अवर हिंट पार्ट. ओके, the distance of the each corner from the center of the regular pentagon is r. Then find the electric field at its center. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में फाइंड करना है. ओके, तो पेंटागन इट इज लाइक दिस. सपोज Q, Q, Q and Q. This one is the pentagon. हमने चार्ज Q रख दिया है 4 sides पे. Now we want to find out, see from the center, you can say the center distance that is r. यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, राइट. अभी हमको ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वो 4 साइड्स पे रखा गया है.
दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी आपको ऐसा दिया जाता है कि पॉलीगन है, यहाँ पे तो पेंटागन है, कोई भी पॉलीगन दिया जाता है आप लोगों को, तो आपको ये याद रखना है जब सभी कॉर्नर्स पे चार्ज हम रख देते हैं, मीन्स यहाँ पे सपोज समझ लो कि आपको 4 की जगह पे 5 साइड्स पे चार्ज दे दिया होता तो ये पूरा सिमेट्रिकल बन जाता। ड्यू टू द सिमेट्री सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 बन जाता है, पर यहाँ पे 4 साइड्स में ही चार्ज दिया गया है। 4 साइड्स में जब चार्ज दिया जाता है तो ये एक चार्ज ना होने की वजह से सिमेट्री डिस्टर्बेंस हो गई है। सो दैट वी कैन से कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बनेगा, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर जितना बनेगा, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। पेंटागन की जगह पे कभी कभी पॉलीगन वर्ड यूज किया जाता है, और n-1 साइड पे जब आप चार्ज को रखते हो, n-1 मीन्स व्हाट, यहाँ पे पेंटागन था, 5 साइड्स आर देयर, पर हमने n-1 पे रखा है। n-1 मीन्स हमने कितने कॉर्नर्स पे रखा है, 4 कॉर्नर्स पे रखा है, so that the electric field is going to be kq by r square. If we are going to put at the all the face means सभी सरफेस के ऊपर, सभी कॉर्नर्स के ऊपर हम चार्जेस रख देते तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाता। So according to the option you can say the correct answer is going to be option A, that is kq by r square.